Foot is one of the part of the body which we always neglect, but it really gives lot of benefits which we do not even consider. For example, by finding out the sensitive point, stimulus point in the feet, you can reduce the pain, you can relax, and stress also can be reduced. This practice is very common in Southeast Asia, starting from Thailand, Indonesia, Laos, Vietnam, and many more countries. It is similar to our massage, how Indian traditional massage is so well known, and many people come from abroad to take Indian massages. People do come to all this Southeast Asia for this treatment. It is non-invasive, pain reduction, and very useful for people if they are in an old age. Government of India, particularly Ayush Department, is well known for adapting herbal, natural, time-tested, traditional treatments. Foot reflexology is also one of the traditional treatment which is practiced in the Southeast Asia. So I would like to request that Government of India, Ministry of Ayush should consider this point and train our people, and with all the detail about the safety and the knowledge, everything, and introduce this concept of foot reflexology in our Ayush hospitals. Sir, with the diabetic, people have become extremely sensitive nowadays because it's one of the major problems in India. So every hospital should have a separate section for this foot treatment, foot reflexology, massaging, and understanding how you can reduce non-invasive treatment and pain. And we can also have other treatments along with the foot problems in diabetic cases because it affects. So people will come to know early diabetic intervention, and you can also find out what causes, and we can also take the treatment. So I consider this is one of the neglected part, but we should introduce the new concept of treating our feet and give the proper treatment. Thank you very much, sir, for giving me time. धन्यवाद. डॉक्टर मेहता विश्राम कुलकर्णी जी. माननीय सभापति महोदय, मेरा आज का शून्यकाल पुणे और दिल्ली के बीच प्रीमियम ट्रेन सेवा प्रारंभ करने के बारे में है. माननीय महोदय, पुणे एक अत्यंत महत्वपूर्ण शहर है और उससे जुड़ी समस्या, ट्रेन की समस्या की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ. महाराष्ट्र एक विद्यानगरी है. महाराष्ट्र केवल पुणे एक विद्यानगरी है. वो केवल महाराष्ट्र के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक शिक्षा की नगरी है. उसे ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है. पुणे एक आईटी हब है. पुणे एक औद्योगिक और स्टार्टअप सिटी है. पुणे में बहुत ही प्रतिष्ठित ऐसी शिक्षण संस्थाएं हैं, अनुसंधान केंद्र है, बहुत सारे आईटी कंपनीज हैं, ऑटोमोबाइल और डिफेंस के उद्योग है. पुणे अब डिफेंस कॉरिडोर भी बनने जा रहा है. तो इससे जुड़े बहुत सारे उद्योग पुणे में हैं. इसकी वजह से पुणे में बहुत सारे छात्र, प्रोफेशनल्स, उद्यमी, कारोबारी और सरकारी अधिकारी कार्यरत हैं और हजारों लोग पुणे से दिल्ली आते जाते रहते हैं. इसके बावजूद माननीय महोदय, देश की राजधानी दिल्ली से पुणे जैसे महत्वपूर्ण सिटी के बीच आज तक कोई भी सीधी, तेज और प्रीमियम श्रेणी की रेल सेवा उपलब्ध नहीं है. ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है माननीय महोदय. वर्तमान में पुणे और दिल्ली के बीच चलने वाली जो ट्रेन है वो 20 से 30 घंटे लेती है. एडिशनली बहुत ही अनिश्चितता है, भीड़ है, बहुत ही सीमित सुविधाएं हैं. प्रीमियम विकल्पों का अभाव यात्रियों को बड़ी परेशानी निर्माण कर रहा है. आज माननीय महोदय, पूरे देश में बहुत सारे शहरों को जोड़ने वाली राजधानी एक्सप्रेस, वंदे भारत और तेजस जैसी सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है.
राजधानी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें, स्लीपर ट्रेनें राजधानी को बड़े शहरों से जोड़ रही है। मैं आग्रह करती हूँ माननीय महोदय कि पुणे और भारत की राजधानी दिल्ली के बीच राजधानी एक्सप्रेस को जोड़ा जाए, नहीं तो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू की जाए, तेजस एक्सप्रेस जैसी ट्रेन भी की जा सकती है। मेरी सरकार से ये रिक्वेस्ट है, ये अनुरोध है कि पुणे जैसे महत्वपूर्ण सिटी को वंचित न रखा जाए। धन्यवाद माननीय महोदय। श्रीमान हर्ष महाजन जी। Thank you, Honorable Chairman, sir. I would like to draw the attention of this House to the Pangi Valley region in Chamba district of Himachal Pradesh and the need to develop Chamba-Kilar-Leh route as both a lifeline for the tribal citizens of this region as well as a critical defense route for the nation. Sir, Pangi Valley is a tribal-dominated area in the aspirational district of Chamba. It is home to more than 25,000 tribal citizens who remain cut off from the rest of the country for nearly 8 months every year. Due to the poor and seasonal road connectivity, access to healthcare, education, and essential services becomes severely restricted. Moreover, this region is one of the most beautiful in the country and when connected will unlock a huge opportunity for tourism in the region and enhancing the social and economic potential of this region. The development of Chamba-Kilar road into an all-weather road, also with a proposed Chani Pass tunnel of 8.5 kilometers, will end this isolation. Sir, this corridor also carries exceptional strategic importance. At present, NH 154A connects Pathankot to Chamba and a seasonal road exists up to Kilar. A missing link of 52 kilometers toward Leh needs to be developed. Once completed, this route will become the shortest approach to Leh, reducing the Pathankot-Leh distance from 800 kilometers to nearly 450 kilometers, and Pathankot-Kargil from 1,000 kilometers to 550 kilometers. This corridor originates from Pathankot Cantonment, a major defense base, and passes through strategically sensitive terrain close to both the LAC and the LOC. It will provide a vital alternative to Manali-Leh access, reduce single route dependency, and strengthen defense logistics, emergency mobilization, and medical evacuation. Sir, this project